Assalamualaikum. Today's topic is Unit 1, matrices and determinants, and we are doing multiplicative inverse of a matrix today. So let's start. Exercise 1.5 को start करने से पहले we will learn about some important things which we are going to apply on some questions in exercise 1.5. First one is determinant of a 2 by 2 matrix. How to find a determinant of a matrix? Let's suppose A is a matrix whose order is 2 by 2. The determinant of A will be denoted by DET, that we can also say it as a determinant of A, और हम इनको A को 2 bars या brackets के तौर पर भी लिख सकते हैं. This will also be we can find out the determinant of A by multiplying in cross. We have to multiply this A with D zigzag. We can multiply the diagonals. A by D, AD minus BC या CB. We diagonals को multiply करके subtract कर दें तो we will get the one number answer, that is the determinant of that matrix. अब B एक matrix है, उसका भी determinant find out करना है. तो what are we going to do is, first of all we can multiply the diagonals 1 into 3, 1 into 3, as you can see 1 into 3, then minus. इन दोनों को minus करना था diagonals को multiply करके, तो minus sign दरम्यान में आएगा. और diagonals को multiply, अगर दूसरे diagonal को multiply करें 1 by 1 और 2, 1 2s are 2 और साइन माइनस का इसके साथ है तो वो माइनस का साइन इधर साथ रहेगा, -2 माइनस और 3 plus 2 will be 5. So we can say that 5 is the determinant of matrix B. If M is a matrix, then determinant of M can also be found out by multiplying the diagonals and then subtracting the answers. 3 2s are 6 minus 6 1s are 6. 6 minus 6 is 0, so its determinant is 0. Which matrices are singular and which are non-singular? A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0. अब ये अगर let's go back to the examples which we have solved. The third matrix was M, जिसका matrix का determinant 0 आया था. अब matrix का determinant अगर 0 होगा तो we can call this matrix singular matrix. For example, if A is a matrix in front of you, 1 2 0 0 is a singular matrix since its determinant is 0. 1 into 0 is 0, minus 2 zeros are 0. So 0 minus 0 is 0. We can singular matrix. A is called a non-singular if the determinant of A is not equal to 0. अगर 0 पे equal नहीं होगा तो we call this matrix non-singular matrix. अब here's another example. एक और matrix A है 1 1 0 2. ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 और 1 zeros are 0, माइनस अगर करें 2 minus 0 is equal to 2 आएगा, which is not equal to 0, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. Let me generate a poll. Singular matrix as determinant options. Singular matrix has option 1 is 1 and option 2 is 0. So you can choose the correct option. Whatever you think is correct, you can choose that. Okay, I'm gonna end this poll. Its correct answer is determinant 0. I'm sharing results with you. Okay, let's move on. Adjoint of a matrix. What is now adjoint?
Adjoint of a square matrix A is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. अब एक diagonal entries adjoint of a matrix A is denoted by ADJ. Short form of adjoint. उसके साथ अगर A लिखेंगे तो that will be the adjoint of A. अब इसको find out कैसे करना है? एक diagonal जो first diagonal होगा, this is the first diagonal, इसके places को change कर देना है. A को D से replace कर देना है और D को A पे. प्लेसेस चेंज कर देनी है. ए को डी की जगह पे ले आना है और डी को ए की जगह पे ले आना है. और दूसरे जो डायगोनल की एलिमेंट्स हैं, दिस इज द सेकेंड डायगोनल. इस डायगोनल के साइन चेंज करने हैं सिर्फ. सी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बी प्लस था तो माइनस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स एडजॉइंट इज 1 को 0 से चेंज कर दी पोजीशन, उसकी 0 ऊपर चला गया और 1 दूसरी साइड पे, पोजीशन चेंज हो गई. दूसरे डायगोनल को सिर्फ साइन चेंज करेंगे. 3 विल बी माइनस एंड 2 विल बी माइनस. एक और मैट्रिक्स है, इफ b इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 एंड माइनस 4. इसमें भी इस डायगोनल फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस चेंज होंगी. 2 और माइनस 4 एक दूसरे की जगह पे आ जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे. Okay, I think there's a problem at your end. ओके, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी. पहले आपने एक डायगोनल की प्लेसेस चेंज करनी है और सेकंड डायगोनल की सिर्फ साइन चेंज करने हैं. 3 अगर +3 था तो उसका साइन चेंज होकर -3 हो जाएगा और -1 का साइन चेंज होकर सिर्फ वो +1 हो जाएगा. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. Okay, next one is multiplicative inverse of a non-singular matrix. Non-singular matrix का multiplicative inverse find करना. Non-singular matrix मतलब determinant उसका जो है 0 नहीं होगा. Let A and B be two non-singular square matrices of the same order. Then A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB is equal to B, A is equal to I. I inverse of identity matrix is also identity matrix. I is the identity matrix over here. The inverse of A is denoted by A minus 1. ये inverse को denote करने का sign होगा. And अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स लेना है, जिस तरह हमें जॉइंट में ए डी जे ए लिख रहे थे, डिटर्मिनेंट में डी ई टी ए लिख रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट करने के लिए, तो जब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए लेना है तो वी कैन राइट लाइक दिस, ए माइनस 1 एट द टॉप उसकी पावर में, सिर्फ उसको डिनोट करने के लिए कि दिस इज द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. When its determinant is not equal to 0, then a matrix is called a non-singular. तो जब matrix non-singular होगा, only then we can find the inverse of a matrix. Let M is the matrix A, B, C, D be a square matrix. To find the inverse M, उसका M minus 1 inverse find करना. First we find the determinant as inverse is possible only of a non-singular. तो पहले इसका चेक करना है. चेक करने का तरीका है कि you have to find the determinant. अगर तो determinant 0 आ जाएगा तो you don't have to find out the inverse. You can stop the question over here and that would be the end. लेकिन अभी first of all you have to find out the determinant of a given matrix A, B, C, D. Determinant कैसे find करना है? You have to multiply the diagonals. A, D multiply by C, B और दोनों को minus करना है. A, B minus ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0. अब वो इनका आंसर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो फर्दर आप उनको इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट फाइंड आउट द इनवर्स. एडजॉइंट ऑफ एम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट. तो एडजॉइंट फाइंड किस तरह करना है?
Okay, this is how you're going to find out the adjoint. Adjoint find करने के लिए पहले आप determinant adjoint find करने के लिए diagonals को interchange करना है. This is 2 and minus 3. This is the one diagonal. इनकी अगर places change कर दें तो minus 3 और 2 आ जाएगा. और दूसरे diagonal की we have to change the signs only. One will minus 1 and minus 1 will be 1. And we have to divide this by the determinant. The determinant of this matrix A is 3 2s are 6, minus minus plus 6 minus 6 plus 1, and answer is minus 5. So you are going to divide the adjoint by determinant. अब ये -5 पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब वी कैन राइट -1/5. माइनस तो साथ ही रहेगा, -1/5. अब ये 5 सब एलिमेंट्स से इक्वली डिवाइड होगा. -3 से भी डिवाइड होगा, -1 से भी, 1 से भी, 2 से भी, और माइनस साइन भी साथ ही उनके मल्टीप्लाई होगा विद एवरी एलिमेंट इन द मैट्रिक्स. दिस इज द इनवर्स ऑफ A इनवर्स. अब प्रूफ करें कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इनवर्स बाय A. अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो वी कैन प्रूव दिस गिवन स्टेटमेंट कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. So ये पहले तो we have found out that this is the inverse. अब इस inverse को हमने multiply करना है A matrix से. A matrix क्या था? Coming back to the matrix again. This was the given matrix 2, 1, -1 और -3. This was the matrix. Multiply अगर इसको करेंगे तो multiply करने की क्या strategy है? First you have to multiply the row with the first column, then first row second column, और इन दोनों को add करना होता है. This is the second row first column, then second row second column. This will be the term for second row and second column. उनके corresponding basis पे उनको लिखना था. अब answer is 1 0 0 1. This is identity matrix. इसका मतलब we have proved that A into A inverse is equal to identity matrix, and if we multiply A inverse into A, that would also be the identity matrix. Coming towards the next topic, this is verification of A B inverse is equal to B inverse into A inverse. अब अगर A B को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में उसका इन्वर्स लें, that should be equal to B inverse into A inverse. यानी पहले B का इन्वर्स लें, फिर A का इन्वर्स, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल आ जाए. So let A is a matrix and B is another matrix. First of all, you are going to take out the determinant of both matrices. क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना करना पॉसिबल ही तब होगा जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक आउट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स. फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 3 zeros are 0 माइनस और 1 1s are 1. तो 3 minus 1 is equal to minus minus plus होगा. 3 is equal to 0. 3 times 0 is 0. So 0 minus 1 या plus 1 हो जाएगा. साइंस मल्टीप्लाई होके तो ये plus 1 के इक्वल आ गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स है 0 2s are 0 और 3 1s are 3. साइन माइनस का है लेकिन दोनों माइनस होंगे तो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू +3. फर्स्ट matrix का determinant is 1, second matrix का determinant is 3, so it means we can take inverse of both matrices. Multiplicative inverse लेना दोनों का possible है क्योंकि दोनों के determinant 0 नहीं है. Both determinants are not equal to 0, so we can find out the multiplicative inverse of both matrices. Then to verify the law of inverse of the product, अब law of inverse अगर वेरीफाई करना है, ये दिस इज द लॉ ऑफ इनवर्स. क्या है? सबसे पहले वी हैव टू मल्टीप्लाई ए बी देन टेक इट्स इनवर्स. अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रोज सेकेंड कॉलम,
first row, first column, first row, second column. Then second row, first column, and second row, second column. उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट दिस ए बी. और इस ए बी का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट के लिए आपने बार्स यूज करनी है, नॉट द ब्रैकेट्स. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3. इसका मतलब वी कैन फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी नाउ. नेक्स्ट स्टेप इज लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स. अब ए बी तो हमने कर लिया. ए इंटू बी इज 3 माइनस 1 0 एंड 1. इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. इनवर्स के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट. डिटर्मिनेंट तो फाइंड हो गया, दैट इज 3. एडजॉइंट फाइंड करना है. एडजॉइंट आएगा बाय चेंजिंग द डायगोनल्स. 3 की जगह 1 और 1 की जगह 3 और बाकी के साइंस. जीरो का साइन जीरो ही रहेगा, जीरो का कोई साइन चेंज नहीं होता. -1 1 बन जाएगा और इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गए. अगर हम डिवाइड कर दें 3 से तो ये आ जाएगा ए बी इनवर्स. 3 को हर एलिमेंट से डिवाइड कर दिया 1/3 1/3. 3 को 3 से डिवाइड किया तो ये 1 आ जाएगा और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा. राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड वाज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. अब पहले बी इनवर्स लेना है. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 3. इसका मतलब वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ बी. पहले इसका एडजॉइंट लेना. एडजॉइंट होगा 2 0 1 3. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3. हर एलिमेंट 3 से डिवाइड होगा और फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 इंटू 3 और 1, ये बी इनवर्स एंड दिस इज ए इनवर्स. अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 और 1/1 को यूज बाहर ही रखें ब्रैकेट से. We then divide it with all the elements, so we are going to multiply both. One से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो it gives you the same number. So 1/3 भी अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो it remains the same. It will remain the same. Okay. Now multiplying the matrices. Row into column. First row, first column, first row, second column. Then second row, first column, second row, and second column. We will get this. इन पे 3 को दोबारा हर एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो we will get this one. It means we have verified left hand side is equal to right hand side, जिसमें a b whole inverse is equal to b inverse into a inverse आता. I hope this is clear. Now coming towards exercise 1.5, जिसमें we are going to do we are going to use those things which we have learned. First question is find the determinant of the following matrices. Ab determinant, can you tell me the determinant of the first matrix? First matrix is -1, 1, 2 and 0. Determinant find करने का, let me repeat one more time. You have to multiply the diagonals and then subtract the answer. The first diagonal is -1 and 0. This is the first diagonal and I'm using other color to use the second diagonal. Okay, second diagonal is 2 and 1. Multiplying both and subtracting the final answer, subtracting the answer. -1 और 0. 0 से multiply होकर कोई भी number 0 ही होगा. It will be 0 -2. 0 -2 का आंसर आएगा -2. So its determinant will be, we can write it as 0. अच्छा, डिटर्मिनेंट को लिखने से सबसे पहले भी यू हैव टू राइट यूजिंग दोज साइंस डिटर्मिनेंट का, कि हाउ आर यू गोइंग टू राइट फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट. सिर्फ आंसर नहीं लिखना, यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिनोट द डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट के लिए ब्रैकेट में भी इसी तरह से डिटर्मिनेंट लिखा. दीज लाइन्स शोज दैट यू आर गोइंग टू So multiplying the diagonals, -1 into 0 and 2 into 1. We will subtract the both answers. -1 और 0 को 0 ही होगा. And then we have to subtract the answer.
2 ones are 2, and answer will be minus 2. This will be the not equal to 0. Okay, I have now refreshed it. Part 2 of question number 1 is find determinant. Find करना है similar. You can find out its determinant easily. C part is also similar to the first one. सिर्फ आपने multiply करना है diagonals को और second diagonals को subtract कर देना answers. D part is also similar. अच्छा, moving towards the question number 2, find which of the following matrices are singular or non-singular can be. First of all, you have to find out the determinant. Because determinant, if the determinant is equal to 0, then if the matrix is if the determinant is not equal to 0, then it is non-singular. Again, find determinants of the matrix A. 4 3s are 12. Be 0. Question number 2 is find which of the following matrices are singular or non-singular. If the determinant is equal to 0, then the matrix is singular. If the determinant is not equal to 0, then matrix is non-singular. So first one is 4 3s are 12, multiplying the diagonals and then taking the difference of both. 4 3s are 12 and 6 2s are 12. 12 minus 2 is equal to 0, so this is a singular matrix. Which of the following matrices are singular and non-singular? B matrix is 4 2s are 8. 8 minus 3 is 5. 8 minus 3 is 5. So you can say that this is non-singular because its determinant is not equal to 0. So you can find out whether the matrix is singular or non-singular easily by finding out the determinants. This is again you have to multiply the diagonals and separate the answers. 4 5 are 20. 20 minus 10 times 2 is 20 because minus minus plus हो जाएगा और उनको सिर्फ minus करना है. 10 2s are 20. Again this is equal to 0, so this is a singular matrix. We will do the question number 3 tomorrow. Find the multiplicative inverse if the inverse is possible. We can find out the inverse easily. First, we have to find out the determinant of each matrix. अगर वो 0 के equal होगा तो it means we cannot find out the multiplicative inverse. अगर determinant 0 के equal नहीं होगा तो we will move on and find out the adjoint and divide the adjoint with the determinant. So we will be doing this question number 3 tomorrow. And I'll be assigning you some homework from exercise 1.5. You can solve and return your homework to me and I'll be checking your homework. That was all for today. So, Allah Hafiz.